हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। ठीक है, हमने पार्टिकल्स का डिस्कस किया था। अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है तो उन सब का इससे डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस फाइंड करके सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देना है। फिर सॉलिड बॉडी का भी किया था, मतलब कि इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डेरिवेशन किया था कि छोटे छोटे पार्टिकल का सबको मिक्स करके हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आज ऐसे ही कुछ डेरिवेशन हम करेंगे। शुरू करते हैं। पहला डेरिवेशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट, चलिए हेडिंग लगाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ लॉन्ग रोड, लॉन्ग थीन रोड, लॉन्ग थीन रोड। ओके, सोचिए कि एक लॉन्ग रोड है, ओके, जिसकी लेंथ है L। लेट अ रॉड of length L and mass m, let a rod of length L, m and mass m is rotating about an axis passing through its CM। ओके, देखो ये उसका CM है। बच्चों, इसकी थिकनेस को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इतना थीन रोड है ऐसा, ये उसका CM है, तो उसके अराउंड ये घूम रहा है, मीन्स ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझ में आया। एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, पर चलिए। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे करें बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। पहले एक काम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना हो x, और जिसकी लेंथ कितनी हो dx। ठीक है, ओके। किसकी लेंथ dx हो बच्चों, किसकी विड्थ dx हो, इसकी, और उसका मास होना चाहिए, देखो ये विड्थ है, देखो अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ अच्छी तरीके से, तो ये उसकी क्या है, विड्थ है। ये कितनी विड्थ है, dx, और उसका मास है dm। ओके, तो क्या होगा, कंसीडर a small mass element, consider a small mass element at distance x, at distance x from axis of rotation। ओके, कितना स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर कीजिए। ओके, लेट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू dm। कितना मास है बच्चों, dm। लेट लेंथ ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू dx। ओके, अभी देखिए, देयरफॉर देखो ये मास कितना है उसका dm, और उसकी लेंथ अपनी कितनी है dx, और डिस्टेंस कितना है उसका x। देयरफॉर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about axis of rotation is given by अभी देखो, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि डी बोल सकते हैं, कितना मास है dm, और उसका डिस्टेंस कितना है x, तो उसका स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वही तो हमने किया था। तो हमें क्या करना होगा, I इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ओके,
देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल इज इक्वल्स टू क्या करना होगा बच्चों, हमें इंटीग्रेशन डी आई। अच्छा, अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अभी देखिए ये जो डी एम है ये क्या है, मास, छोटे से एलिमेंट का कितना मास हो सकता है, देखिए फॉर लेंथ एल, फॉर लेंथ एल मतलब पूरी लेंथ है, ठीक है, मास इज इक्वल्स टू एम, पूरी लेंथ के लिए पूरा मास है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फॉर लेंथ डी एक्स mass is equals to dm, therefore what you can say, dm is equals to m dx upon l। देखो हमेशा ऐसे ही फाइंड करना है आपको मास dm, ठीक है। अभी मैं dm यहाँ पे लिख दूं तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अभी dm की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अभी x जो है उसके लिमिट क्या रखे बच्चों, देखो ये x है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास पे है और ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं कि कह सकते हैं यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है l/2, कितना है l/2, और ये जो डिस्टेंस है ये है -l/2। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, ये डिस्टेंस कौन सा है, कितना है -l/2 और ये है l/2, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हम x की लिमिट क्या लिख सकते हैं, x की लिमिट हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो x की लिमिट -l/2 से लेके +l/2 तक। ओके, क्योंकि हमें तो एक्सिस से ही डिस्टेंस देखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट्स वाई। अभी जो m अपॉन l आया, ठीक है, ये कांस्टेंट है, सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम -l/2 to +l/2। ओके, सो m अपॉन l, एक्स स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x³ by 3 एंड व्हाट विल बी द लिमिट फ्रॉम -l/2 to +l/2। ओके, सो व्हाट यू कैन से m अपॉन 3l, पहले x की वैल्यू l/2 रखो तो क्या आंसर आएगा आपका, l³/8, ठीक है, l/2 का क्यूब करना है बच्चों। देखो मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, क्या करना है आपको, l/2 क्यूब माइनस l/2 क्यूब, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए l का क्यूब l³, 2 का क्यूब 8 माइनस l का क्यूब तो माइनस l³ अपॉन 8, तो हम क्या बोल सकते हैं, l³/8 प्लस l³/8 बोल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, so it is a l³/8 plus l³/8 means l³/4, so m upon 3l into l³/4। ओके, तो यहाँ ही लिख देता हूँ, therefore I is equals to, अभी देखिए यहाँ पर हम m नहीं सॉरी एक l को कैंसिल कर सकते हैं, so I is equals to ml square डिवाइड बाय 4 3 12। ओके, इसको मैं ICM बोलूंगा, क्यों, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू CM, सो व्हाट इज द आंसर, ICM इज इक्वल्स टू ml² by 12। ओके, इसको मत भूलना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, ICM इक्वल टू ml²/12। कब, जब रोड ये जो है वो सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है ऐसे, तो वो तो आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल टू ml²/12, ठीक है, भूलना मत। चलिए एक एग्जांपल उसके ऊपर करते हैं। हाँ, देखिए फॉर एग्जांपल एक रोड है, इसका मास है 3 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी लेंथ है 2 मीटर। ओके, और वो जो रोड है वो जो सेंटर ऑफ मास है वहां से ऐसे घूम रहा है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करें, तो बच्चों I इज इक्वल्स टू, मास कितना है 3, ओके, एल स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा
4 divided by 12. So 3 4 जा 12, 12 by 12. So what will be the answer? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बच्चों एक चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, वो थी रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आपको याद है तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो मैंने ट्रिक बोली थी क्या, कि जो भी आंसर दिया है उसमें से m गायब कर दो। तो m गायब कर दिया तो बचा है क्या, एल स्क्वायर बाई 12 और उसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब कि l अपॉन 2√3, l अपॉन 2√3। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन, या तो गायरेशन कभी कभी कोई बोलता है। एल अपॉन 2√3, अगर हमें एल अपॉन 2√3 फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर भी अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो एल क्या है, 2, 2 अपॉन 2√3, तो 2 कट हो गया, सो आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, देखो बच्चों हमने यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें पोस्टमार्टम करना चाहूंगा। ये हमने एक्सिस यहाँ पे रखी थी, ठीक है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, l/2, और ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, -l/2। ठीक है, इसलिए x की लिमिट l/2 से लेके -l/2। अगर 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 आपने देखो एक्सिस अगर चेंज की, अगर आपने एक्सिस यहाँ रख दी, मतलब कि रोड पूरा ऐसे घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि आई डैश अगर मैं बोलूँ तो कितनी आएगी, तो उसके लिए कुछ दूसरा नहीं है बच्चों, आई डैश इज इक्वल्स टू, देखिए कितने स्टेप सेम रहेंगे, यहाँ तक सारे स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ लिमिट जो -l/2 से लेकर +l/2 था वो क्या आएगा, देखिए ये m अपॉन l और x³/3 कर देता हूँ, m अपॉन l x³/3, अभी लिमिट में कर देता हूँ 0 से लेके l तक, क्योंकि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट का नजदीक वाला डिस्टेंस तो 0 ही होगा और हाईएस्ट डिस्टेंस कितना होगा, L. So if you put the limit, so what answer you will get, ml³/3l, एक l cancel हो गया, so 2, so ml²/3। बच्चों I think now you get the idea that wherever the axis of rotation is given, I think easily you can find out. Suppose axis of rotation is given here, that यहाँ से रोटेट कर रहा है, मैं फिर से रोड ड्रॉ करूँ, हाँ ठीक है, इस रोड की पूरी की लेंथ l है और यहाँ से रोटेट कर रहा है, जो यहाँ से कितनी है, l/4 और यहाँ से ऑब्वियसली 3l/4। ठीक है, तो सेम टू सेम बच्चों यहाँ तक तो सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ लिमिट में क्या चेंज आएगा, लिमिट में चेंज आएगा -l/4 से लेके 3l/4। ओके, और देन आफ्टर easily you can replace the value and easily you can find the answer। अगर ये रोड है, इसको आपने थ्रेड के साथ ज्वाइन करके यहाँ एक्सिस डाल दी और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो, ऐसे ऐसे रोड रोटेट कर रहा है और सोचो कि ये डिस्टेंस a है, तो लिमिट क्या आएगी बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, a, मिनिमम डिस्टेंस a। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस l। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा डिस्टेंस ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से? तो एक बार अगर आपको लिमिट लेना समझ में आ जाए तो कहीं पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रख दो, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, याद रहे सीएम से जो आंसर मिला वो क्या था, ml²/12। ओके, व्हाट इज द आंसर, ml²/12। ओके स्टूडेंट्स, so now we are going to derive another moment of inertia, that is moment of inertia, moment of inertia of ring, moment of inertia of ring। ओके, सी, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा, डिस्क्रिप्शन तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको सिर्फ बोल दूंगा, अगर आपको लिखना है तो जब मैं बोलूँगा तब तक आप लिख सकते हो। सी, दिस इज अ रिंग। ओके,
Consider a ring of radius r and mass m, and it is rotating about an axis passing through its cm. Okay, what is the radius? Radius of the ring is a r, and axis of rotation. See, I will draw the axis of rotation. Axis of rotation is like this. Okay, and it is rotating through this axis of rotation, and we have to find I, or you can say we want to find out ICM. What is the mass m? Okay, consider very small mass. See, I have considered very small mass dm, whose distance is r. Therefore, what is the answer? Answer of that small moment of inertia di is equals to dm, and what is the distance? R square. Okay, therefore total moment of inertia is equals to integration di, means integration dm r square. Okay, now dm, see, r square is a constant, integration dm. See, this mass, okay, or this mass or this mass, all mass are at the same distance. That's why you can write here directly integration dm as a m. And what will be the answer? Answer will be I equals to m r square. ICM. ICM will be is equals to m r square. See, in the previous derivation, we have not written integration dm as directly m. What is the reason? See, this is the dm, and if you write dm here, then its distance will change and its moment of inertia will change. If you write dm here, then its distance will change and its moment of inertia will change. Okay, and you have to add all that moment of inertia. That's why we have to do the integration. Okay. Now here, if you are drawing dm here, if you are drawing dm here, if you are drawing dm here, if you are drawing dm, wherever you want to draw, okay, its distance will always be r. सबका डिस्टेंस कितना रहेगा? r ही रहेगा. That's why they all have a same moment of inertia. That's why you can directly write integration dm is equals to m, and that will be your answer. ICM is equals to m r square. Okay, k रेडियस ऑफ जायरेशन. चलो क्या करना है? m को उड़ा दो. m को उड़ा दिया तो बचा क्या? r स्क्वायर. उसका अंडर रूट ले लो. r स्क्वायर का अंडर रूट होता है r. ठीक है. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन? r. चलिए एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो है रिंग, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. कितनी है? 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसका मास है कहीं 4 किलोग्राम. ठीक है. सो फाइंड आउट इट्स रेडियस. हाउ यू विल फाइंड आउट इट्स रेडियस? ओके, सो here mr square, so 4 into r square is equals to 20. So here 4 5s are, therefore r is equals to root 5. How simple? Much simple. Clear? Okay, fine. And if you want to find out radius of gyration, then it will be same, root 5. Okay, but the condition is that it should rotate from this. Okay, what if it rotate from here? Question is there, that what if it rotate from here, or what if it rotate from here? Okay, that derivation become much complex. So one easy method is there, but right now I am not going to discuss the parallel axis and the perpendicular axis theorem, with the help of which easily you can find out this moment of inertia. Before that, you should know that what is the moment of inertia, okay, at the cm. Okay, and then after easily you can apply the theorem of parallel and perpendicular axis, that we are going to see in the next video. Okay, don't worry. Okay, now let's see one more moment of inertia derivation, and that is the moment of inertia of disk.
moment of inertia, moment of inertia of disk. Okay, we have derived moment of inertia of a ring, but now we are going to derive moment of inertia of a disk. Suppose this is a disk, okay, and it is rotating about an axis like this, okay. Let mass of the disk is the m and radius of the disk is a r, okay, and it is rotating about an axis of rotation, okay, and obvious its cm is lying here. That's why one thing that axis should get defined, that moment of inertia of a disk, it's not complete information. Moment of inertia of disk about an axis, about an axis passing through cm, passing through cm, okay, but passing through cm is also not complete information, and perpendicular to its surface, perpendicular to its surface. Why? Because suppose if you say disk, okay, moment of inertia of a disk, so about which axis? It can rotate about this axis, yes. It can rotate about this axis also, yes. It can rotate about this axis also. You have not defined that about which axis. So first you have to define the axis. Axis passing through cm, okay, fine. This is a cm, right? So this axis may pass through the cm, okay. This axis may pass through the cm. This axis may pass through the cm. Okay, this axis may pass through the cm. So many axes are there which can pass through the cm. So which axis we have to choose? Perpendicular to its surface, means specially this axis we have to choose. Clear to you? Okay, that's why we are writing here complete information about an axis passing through cm, passing through cm and perpendicular to its surface, okay. Here mass distribution is everywhere, okay, it is a surface. That's why we have to consider a ring. First of all, we have to consider a small ring, okay, as I say, right, consider a small ring, consider a small ring of mass dm, consider a small ring of mass dm, ओके, एक रिंग आपको कंसिडर करनी होगी जिसका मास कितना हो dm एंड रेडियस r, रेडियस r and thickness dr. Consider a ring of mass dm, radius r and thickness dr. Okay, now write uh, for area, for area pi r square. See here it is a disk, that's why we have to consider surface, that's why I am considering area. For area pi r square, mass is equals to m. How much mass? M. Therefore, for area dA, you will say where is dA? This area, this one, this blue that I am drawing here, area of the ring, okay. For area dA, mass is equals to dm, okay. Therefore, what you can say about a dm? dm is equals to m into dA upon pi r square, okay. Let me tell you something about the dA. See, I am drawing the ring here, what we have considered in the diagram. This is the radius r and this is the ring.
Okay, and width of the ring, that width is the dr. Okay, how much is the width? Dr. Suppose if you break the ring, then it will get converted like this, yes, in a strip. What will be the length of strip? Obviously 2 pi r. And what will be the width? Dr. Now tell me, what will be the area of this rectangular strip? Here, dA is equals to length into breadth. What is the length? 2 pi r into dr. Okay, so what you can say? Therefore, dm is equals to m 2 pi r dr upon pi r square. Anything cancels? Yes, pi get cancelled. So what is the answer? 2m r dr divided by r square. So what is this? Dm. Now calculate moment of inertia of ring. Therefore, mi of small ring, see we are considering right now mi of small ring only, okay? Small ring, di is equals to, what is the answer? Dm into r square. We have derived the formula that mass into radius square. So what is the mass? Dm, and radius is the r square. So dm into r square. So what is the dm? It is 2mr dr divided by r square multiplied by r square. This is the small moment of inertia. Right. Now we are interested in the whole disk. Okay. Therefore, total moment of inertia of disk, total moment of inertia of the disk, I will write ICM because it is passing through CM, right? It is equals to integration di. It is equals to integration 2mr dr upon r square into small r square. Now, see, I will write again, is equals to 2m upon r square. It is constant term, and integration r cube dr. See, this is r and r square. So r cube dr. The limit of r is from 0 to capital R. What do you think? See, this is the r. If you consider very small ring, okay, then its radius will be very less. Okay, so minimum value of r is a 0, and you can consider ring also here, means at the periphery. Okay, so maximum value is the r. That's why I am replacing the limit as a 0 to r. Okay. Now integrate it. 2m upon r square. What is the integration of r cube dr? R raised to 4 upon 4. Okay. And what is the limit from 0 to r? Okay. Now, so here 2 to get cancelled. Here 2. So m upon 2r square. Okay, now put r is equal to capital R. So you will get r raised to 4. Okay, minus 0 raised to 4. R raised to 4 minus 0 raised to 4. So you will get as m r raised to 4 divided by 2r square. So anything cancel? Yes, r square get cancelled out. So what answer you will get? ICM is equals to mr square by 2. ICM is equals to mr square by 2. Okay, so this is the moment of inertia of the disk. Student, remember two derivation, that rod and the disk derivation. They are very important. Okay, and these two derivations are only in your syllabus, and they are only important. Okay, and for other one, see, you have already given a table that I will give you in the next video, in which we are going to discuss uh, this theorem, perpendicular and a parallel axis theorem. But you should remember this,
Let's calculate one very small example from this, that one ring is there. One ring is having more mass m and radius r. One disk is having mass m and radius r. If it is asked what is the moment of inertia of ring upon moment of inertia of disk, what is the ratio, and what will be the answer? Mr square, and here mr square by 2. So get cancelled, and what will be the answer? Answer is a 2. Okay, so for today this much is enough, I think. Calculate example based on this. Yes, one thing I forgot is that k. So forget about m and make square root. So it will be r by root 2. Okay, what it will be? R by root 2. Okay, and if here it is asked, then it will be what is the okay, see here it is a ratio, so no question regarding the radius of gyration. Okay, is it clear to you? Okay, fine. So for this much for today, and in the next video we are going to discuss next concept. Okay, thank you and namaskar.